हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुवर्या अकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आपके सेकंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे और सेकंड यूनिट में से हम आपकी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है एनिमल्स उसको वार्मिंग अप आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वार्मिंग अप में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेट इनटू पेयर्स एंड द फॉलोइंग। You have to do this question or you have to solve this question with the pairs. So firstly, make pairs with your classmates. After that, here we have given a statement of Mark Twain. Statement here है, the more I learn about people, the more I like my dogs. Mark Twain. Now, discuss with your partner what Mark Twain means from the above quote. Write in your own words. In this statement, what Mark Twain trying to indicates us. यह हमें आपके यह आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करके यहाँ पे लिखना है। आंसर, by the above quote, Mark Twain means that his dog has certain qualities which he wishes that human being possesses but do not. Each day, as he comes across different people and learn more about human nature, the feeling grows within him that humans possesses many disagreeable qualities that do not help in improving relationships. As a result, he begins to love his dog more than human beings. Here we have completed the first question. Now we will be moved towards the second question. Our second question, put the following attributes or abilities given in the proper circles. So here we have given some attributes which are common in human beings as well as animals, and the attributes which are only present in human beings and the attributes which are only present in animals. So we have to classify the attributes in three phases. Like first is the attributes which are present only in humans. Second is the attributes which are present in both, means animals and humans too. And the last is the attributes which are present in what? Present in animals. Okay. So firstly, the attributes which we have given, we will see. First, self-control, communicates, love and care, cooks, good manners, has 360 vision, shows gratitude, lives for more than 150 years, swims, learns computing, worship God, sleeps in standing position, stands up immediately after birth, brings, brings up children, and lastly belongs to various species. Now we will classify it. First, humans have different attributes like you can see on the screen: cook, learn to compute, stands up immediately, worship God, and good manners. Next, common to both are self-control, communicates, love and care, shows gratitude, and lastly, swim. Afterwards, last is the last attributes are about animals. Lives for more than 150 years, sleep in standing position, has 360-degree vision, belongs to various species after birth, and brings up children. And here we have completed the second question too. Now we will be moved towards the third question. Question third. At times, especially when you are frustrated, you wish you were an animal or a bird, a fish, a butterfly, and not a human being. Say which of the above you would choose to transform to and give 3 or 4 reasons for your choice. Many times we are frustrated, and at that mindset or at that time we think that if we are not a human beings, we will be a animal. Animals doesn't get frustrated and we will be free from this tension and this frustration. तब हमें, अगर आपको किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है तो आपको लगता होगा कि हमें एनिमल होना चाहिए था। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप कौन सा एनिमल बनने के बनने का सोचेंगे। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स सजेस्ट किए हैं, लाइक एनिमल्स, अ बर्ड और अ फिश और अ बटरफ्लाई। व्हाट डू यू वांट टू बी? इसका आंसर सबका अलग हो सकता है। आप आपके पसंदीदा एनिमल्स को कंसिडर करते हुए आंसर लिख सकते हैं। आई हैव गिवन अ मॉडल आंसर। आंसर, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई wish I could be a bird so I could fly away from the cause of frustration. At such times, I would like to be far from the noise and crowd on earth
and sail in silence across the sky. I would prefer to concentrate on my own thoughts and regain my peace. The best place for that would be up in the heavens close to the God. Flapping my wings would keep me active and busy and help me forget about my worries. Afterwards, next question, question number 4. We came across many animals in our vicinity. We have also read about different animals in books. Make a list of all animals that fall under various categories. One is given for you. So, in day-to-day life, we see or we hear different kinds of animals, and here you have also read different kinds of animals them in your books. And we have to classify the animals into different kinds like amphibians, mammals, wild animals, aquatic animals, as well as pet animals. So we will do it. Amphibians consist of frog, toad, salamander, Sicilian. Mammals consist of cow, bat, squirrel, and mongoose. Wild animals consist lion, tiger, bear, wolf, cheetah, leopard, and monkey. Aquatic animals consist like animals, octopus, crocodile, alligator, hippopotamus, turtle. And pet animals are like cat, dog, guinea pig, and goldfish. After that, so this is our last question from our warming up. I hope you have understand all this question from the warming up. अगर आपको इस वार्मिंग अप में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। या यहाँ पे हमारा यह वार्मिंग अप का सेशन खत्म होता है। अगर आपको इसी तरह से इसके आगे की इस पोएम से रिलेटेड जो कुछ भी वीडियोस है, लाइक हमारा वर्कशॉप है, हाजिन क्वेश्चन है और एप्रिसिएशन का वीडियो है, पोएम का वीडियो है, यह देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो एक ही जगह पे देखने के लिए हमारा गुरुवरिया एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद करेंगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, वहां पे भी जाके आप यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके भी लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हमने चैट सेक्शन दिया है, के भीतर आप आपके डाउट्स आपके और क्लासमेट के साथ मिलकर डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे हमारे टीचर्स भी है, उनके साथ भी आप डिस्कस करके आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में यहाँ पे हम रुकेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।